Dear all, I am here to detail about this experiment. The name of the experiment is differential wheel and axle. So this is the wheel, you can see here, and there are two axles. This is the larger one and this is the smaller one. And it is connected with the rod that is known as the shaft. And the shaft is connected with the bearing. And the string connected with the wheel is subjected to the effort pan. And there are two strings, you can see. Two strings are required to hand the load. So there is a pulley and this is the hanger. So there are two strings. One is connected with the smaller axle and another is connected with the larger axle. Now the aim of the experiment is to determine the mechanical advantage, velocity ratio and efficiency of the machine. And this is the which kind of machine? It is the lifting machine. And suppose there will be only one axle, then it will be known as simple wheel and axle. So what is mechanical advantage? Mechanical advantage, by applying little load we can lift the larger load. जैसे कि कुएं से अगर पानी खींचना है तो खींचते समय आप पुली के थ्रू एक रस्सी बंधा होता था और उसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा जो लोड करना चाहिए so just visualize, suppose I am going to raise a bucket with filled water without pulley and with pulley, and if we compare the efforts required, so definitely the वेल से कुएं से पानी खींचते हुए अगर बिना पुली के करें तो ज़्यादा एफर्ट लगेगा, अगर वहीं पे विद द हेल्प ऑफ पुली करें तो कम एफर्ट लगेगा. सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज बोला जाता है कि कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोड को लिफ्ट कर सकें. सो इट इज़ वन काइंड ऑफ lifting machine. So you can see here, now we are going to apply a load. Suppose some load, please provide. Load is applied here. This one is 100 gram effort. Again 100. So suppose 100 gram effort. So आप देख सकते हैं जैसे 1 kg का लोड अप्लाई किया गया है एंड जो एफर्ट पैन में 100 ग्राम वेटेज अप्लाइड. So is there any movement? No. Okay. Now 300 efforts is being applied. So from here you can see 300 grams effort is able to lift the 1 kg of the load. This is the beauty of this experiment. And this concept we apply in real engineering applications. Regarding
velocity ratio. So what is this? This wheel is the driving wheel and axles are the driven. So velocity of it is the ratio of velocity of the driving wheel and velocity of the axles, driven wheels. There are two characteristics curves. One is effort versus load and another is efficiency versus load. And if you see the view, there are two views, from the front side and from the side view. साइड व्यू इफ यू सी तो सबसे पहले क्या दिखेगा, एक छोटा सर्कल में ये जो छोटा एक्सेल है, स्मॉलर एक्सेल एंड देन लार्जर एंड द व्हील्स. तो इस प्रकार से तीन सर्कल्स दिखेंगे. इसका मतलब है आप साइड व्यू से देख रहे हैं. अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको applied a load of 200 grams already. As we can see, wheel is still stationary and no motion in the apparatus. Then again we raise the load. Start. For checking minimum effort required for raising the load, we increase the effort in the pan gradually. As 200 grams of load is already been applied, we again raise the load by 50 grams of load. As we can see, there is some motion we are getting in the wheel, and now again wheel is stationary. So as we can see, this is a minimum effort required for lifting the load. Again we if we increase the effort in the pan, then motion in the wheel will start, and it is not the minimum effort. As we have to find out the minimum effort for raising the load. So this value we can consider as a minimum effort for raising the load. And if you want to explore, so what is the effort applied to give motion to this wheel? We are raising the load by 20 grams again. There is still no motion. Then we replace this 20 gram of weight with another 50 gram of weight. Here you can see, when we raise the load, the wheel is in continuous motion. Then this is not the minimum effort. So we have to check the minimum effort first, and we take the notation of this load and the effort in the observation table. We can perform number of observation to get the values for mechanical advantage and velocity ratio. As we can see, this system has we are not changing the system here. Then velocity ratio for this system will be constant for each value of observations, and accordingly we can raise the load. Then we will increase the effort accordingly. As I am increasing the load by 0.5 kg again in the hanger pan. And now effort is required is greater than previous effort. As we can see, there is 370 grams of load is required, effort is required for lifting a 1.5 kg load. In this manner we will perform the number of observation. Then we will take the values in observation table and we can do the thereafter calculation. Is wind up by some rope. So rope होने से क्या होगा, सिस्टम में फ्रिक्शन आ जाएगा.
तो एक अनदर कॉन्सेप्ट इस सिस्टम में आता है डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल एक्सपेरिमेंट में, लॉ ऑफ मशीन। ये क्या कहता है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड। तो इससे पहले हमें ये देखना होगा कि सिस्टम में फ्रिक्शन क्या है। तो फ्रिक्शन का वैल्यू वो हम लेते हैं, फ्रिक्शन का वैल्यू हम वो लेते हैं जब लोड का वैल्यू 0 हो। मीन्स व्हाट शुड बी द मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू इम्पेंड द मोशन ऑफ द सिस्टम। नाउ सी इन द एक्सपेरिमेंट, it is at equilibrium condition, we are applying, see, 15 gram weight in effort pan. As we apply load, its motion start impending. So this is the value of friction of the simple lifting and machine. We can perform this experiment and we can have exposure by applying minimum load. We can lift the larger load, means by applying minimum effort ज़्यादा लोड को लिफ्ट कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। एंड मैकेनिकल एडवांटेज, इट इज द रेशियो ऑफ द लोड लिफ्टेड टू एफर्ट अप्लाइड। सो जैसे कि बताया, ज़्यादा लोड लिफ्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इसका वैल्यू जो होता है हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। और वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो इसमें जो भी डायमीटर्स है व्हील्स का, एक्सेल्स का, वो कांस्टेंट है, तो इसलिए ये वैरी नहीं करता, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। दिस इज फिर से ओवरव्यू। ये कर सकते हैं आप, ये रॉड जिसको सॉफ्ट बोला जाता है, सॉफ्ट से कनेक्टेड है व्हील, एक व्हील है और 2 एक्सेल्स हैं, इसलिए डिफरेंशियल व्हील हो जाता है ये। और जो व्हील है ये ड्राइविंग व्हील, एंड द अनदर एक्सेल्स आर नोन एज द स्टेप्ड व्हील, means the driven wheels। एंड ये जो स्ट्रिंग है ये वाइंड अप है व्हील से, और देख सकते हैं ये जो हैंडल है दोनों एक्सल से कनेक्टेड है। सो इन दिस वे वी कैन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।